चलो, so we left with some topics. Rebounding of a ball after collision with the ground. Okay, collision करने के बाद rebound time में what is the velocity, what height it will go, what the total distance travel, total time taken, that all things we'll calculate. Just formulas we have to learn this one. इसका कुछ derivations वगैरह नहीं करने का, only formulas first understand. Okay, चलो. So मैं मतलब here E will be 1/2, anything it can be. At that time, how to do tackle these questions, we'll see. Okay. सपोज मान लो एक ऑब्जेक्ट इज देयर, एक बॉल समझो, इट इज एट अ हाइट ऑफ h0. h0 इज द ओरिजिनल डिस्टेंस, मतलब ओरिजिनल हाइट. ओके, आई ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे गिरेगा विथ u0 वेलोसिटी, मान लो फाइनल वेलोसिटी इज u0. ओके, नाउ रीबाउंड करने समय कितना होगा मालूम है? e v0 होगा. e इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके, नाउ ये ई यू नॉट होगा, जाके कितना हाइट तक जाएगा? ई स्क्वेयर एच नॉट होगा. सो हाइट विल भी देखो स्क्वेयर ई पावर 4 ई पावर 6, ऑल ओरिजिनल से कंपेयर करने वाले. ऑलवेज वी ऑलवेज कंपेयर विद ओरिजिनल ओनली. देखो इवन नंबर जैसे हो रहे ना, 2 4 6 ऐसा आ रहा है, एंड वेलोसिटीज आर 1 2 3 आ रहा है. देखो ई यू नॉट, ई स्क्वेयर यू नॉट, ई क्यूब यू नॉट इज द फाइनल वेलोसिटी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड. Okay, at that time they will ask what is the velocity of the ball just after nth collision. It can be first collision, second collision, third collision, कितना velocity होगा? So उसका formula है un is equal to e power n under root 2g h naught. So first collision means n equal 1 लगाओ, second velocity Sir, the video is second. Yeah, can everybody hear now? yeah. Yeah, sometimes net problem हो रहा है. Okay, now total distance covered. Total distance covered. Total distance means, देखो this is some distance, some distance, some distance, some distance. Total distance covered. 1 Okay. plus e square by 1 minus e square. Into h naught. 1 plus e square by 1 minus e square times of h naught. Is the distance covered. Okay. Total time of flight. Total time taken. मतलब after 2 collision, 3 collision, total time कितना time लगा बोले तो under root 2 h naught by g. Okay. Now last one is nth height of the ball to rebound. कितना n equal 2 लगा तो e power 4 आएगा. This one you have to understand. So these formulas you have to know rebounding के वजह से. All questions you can solve by this. Sir, what do you mean nth height of the ball? Understood? So what does the nth height of the ball means? Nth height of the ball means suppose एक collision करने के बाद whether same height will go or no, right? It will go कितना height तक जाएगा means your substitute n equal first collision के बाद, right? So n equal 1 लगा. Understood. हाँ, चलो. अब एक JEE मेंस क्वेश्चन करो. I'll give you options also. Just 21 में आया था.
So rubber ball is released from a height this much above the floor. It bounces back repeatedly, always rising to this much. This much height जाके Sir, average speed or nth speed? So So after how many collisions does it rise up? See, above the word, it bounces back repeatedly after rising. The first collision ले लो, no problem. It is constant now. So first collision में h1 लगाए तो क्या होगा? E square times of h naught. So first collision के बाद कितना height rise हुआ? 81 by 100 times of h naught rise हुआ, right? That is constant now. E square times of h naught. So h naught, E value is how much you got? 9 by 10, that is 0.9. E value आने के लिए this condition is given to you. Now find average speed means total distance by total time taken. मतलब h find करो and time find करो, divide करो, आ जाएगा. sir, take it as one collision only. Because constant. So you'll find distance and time, and then what will you do? You'll divide. Sir, I got two. How much? I got 2.5. आपका? 1 second, 1 second. So after you find distance and time, what do you do? Distance Divide. is nothing but h, time is nothing but t. Divide करो. Average speed का फॉर्मूला क्या है? Total distance by total time taken. So h by t. So I got 3. I got 3.09. So 3. 3 ऑप्शन नहीं है ना? हाँ 3 है. ओके. यो कृष्ण हाइट कितना है आपको मानो? So h naught हाँ कितना? 500 by 81. डेसिमल ठीक है.
and time of flight The H naught is given, no? h not is given, h capital H we have to find. So the Ah, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मींस मतलब बॉल इधर से इधर तक गिरा दस इटा ये जाके टिंग 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 मार के कर So total distance, we'll use that distance formula only, 1 plus हाँ E square 1 by plus e 1 square by minus. 1 plus हाँ that only. That will so be, wait, sir, H naught is 5 or H is 5? अरे the rubber ball is released from the height 5 meters मतलब it is released from a height of 5 meters, h naught is 5. Oh my God, sir, I took H is 5. हाँ so ये वाला यूज करो टोटल डिस्टेंस का this one 1 plus e square by 1 minus e square into h naught. Okay, so so it's 2.5 is answer. 2.5. 2.5 is answer. Okay, so total total distance by total time taken. Total distance आप palm लो इसको या total okay. I will go for oblique collision का एक दो एग्जांपल देख लेंगे हो जाएगा. Okay, oblique collision all okay. Oblique collision means according to you what? Tell me. Oblique collision means according to you what? Hit Head on at collision certain means angle. certain angle में हिट करेगा. Okay, in terms of line of impact terms में we'll talk. देखो अगर ये बॉल है ये बॉल है दोनों इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी u1 u2 भी जा रहे हैं ये कोलाइड हुआ जुप बोल के कोलाइड हुआ. देखो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट नॉर्मल का डायरेक्शन इसका नॉर्मल कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का. देखो इसका परपेंडिकुलरली दिस इज नॉर्मल एंड इसके इससे परपेंडिकुलर दिस इज नॉर्मल. दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट. लाइन ऑफ इंपैक्ट. ओके, कॉमन नॉर्मल को वी कॉल्ड एज लाइन ऑफ इंपैक्ट. दोनों जो अटैच होगा ना उसका परपेंडिकुलरली इफ आई ड्रॉ दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंपैक्ट. ओके, हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा मालूम है. हेड ऑन कोलिजन में व्हेन दे हिट राइट इसका कॉमन नॉर्मल क्या होगा. देखो कॉमन नॉर्मल ये वाला एंड ये वाला राइट. ये कॉमन नॉर्मल दैट मींस u1 u2 the motion of the object and line of common normal both are in same direction. That's why it is called head on collision. Both are in same direction. But ये वाला क्या होगा when they hit the line of motion and common normal is not at same line certain angle में that is called oblique collision. समझ में आ रहा है. देखो इधर line of motion and common normal are in the same direction same line में है same x axis में है that is called head on collision. ऑब्लिक कोलिजन में क्या होगा. देखो कॉमन नॉर्मल ऐसा है ना एंड द वेलोसिटीज आर सर्टेन एंगल थीटा अल्फा इन एनी एंगल. सो दिस कॉमन नॉर्मल एंड मोशन इज नॉट एट सेम लाइन. दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं. सो मैं इन टर्म्स ऑफ लाइन ऑफ इंपैक्ट टर्म्स में वी आर टेलिंग. ओके, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग दिस ऑब्लिक कोलिजन का देखेंगे. चलो नो मान लो you have two objects. okay, ये हिट होने वाला है. ये हिट हो जाएगा मतलब अब आप स्ट्राइकर एंड कैरम के खेलते हैं ना हिट करने से ऑब्लिक कोलिजन होगा राइट. सो मान लो दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट. इसका इट इज मूविंग विद एंगल इज थीटा एंड इसका एंगल इज अल्फा राइट. ये हिट हुआ ऑब्लिक कोलिजन. देखो भाई ऑब्लिक कोलिजन मालूम समझ में है ना. लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड मोशन आर नॉट एट सेम लाइन सो सर्टेन एंगल में. ओके हाँ इन ऐसा जनरल मेथड से देखेंगे. नाउ टेक द कंपोनेंट्स. फर्स्ट जनरल मेथड देख के देन विल गिव द न्यूमेरिकल्स. ओके नाउ टेक द कंपोनेंट्स. व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वन इज कंपोनेंट क्या होगा u1 sin थीटा एंड इसका परपेंडिकुलर इज u2
sin alpha, right? Components. नेक्स्ट, आपको कोलिजन करने समय हिट होने के बाद the two balls will be coming like this. This is the line of impact. Okay, you tell me which components will be change होगा, tell me. आपको हिट होने समय force will be acting, action reaction pair acting in this direction along the line of impact. So ये velocities will change along the line of impact वाला velocities will change, but perpendicular to line of impact वाला will not change because there is no force there में. मतलब फाइनल में आपको ये वाला सेम है, u1 sin थीटा है, u2 sin अल्फा, ये वाला कभी भी सेम है. ओके, फाइनली. एंड आपको along the line of impact will change, right? I call that as v1, and that velocity along the line of impact ko I call as v2. Okay, so v1, v2. So when they say tell to find the velocity v1 along the line of impact भी करने का and इसका perpendicular component भी करने का, दोनों को net resultant is only the v1, net velocity का v1 का first object का. समझ में आ रहा है? So when they telling oblique collision में find the velocity v1, find the velocity means आपको क्या करने का, v1 भी find करेंगे, u1 cos theta sin theta will be getting from this, and दोनों को net resultant मतलब net velocity will be under root v1 square plus u1 sin theta whole square. This resultant velocity is nothing but ball का first ball का velocity, right? So problems कैसे करने का, first में always apply conservation of momentum to find velocities वगैरह में. What is the steps you have to follow? Find conservation of momentum. Momentum along the line of impact. Okay, now tell me along the line of impact क्या है initial momentum? Mass into velocity m1 u1 cos theta plus इसका m2 u2 cos alpha is equal to इसका क्या होगा, along the line of impact only we should see m1 v1 plus m2 v2. The first step, along the line of impact only we have to apply the momentum. Next, understanding? Yeah, sir. हाँ, सेकेंड वन वो भी नोटबुक के लिख लो, इधर नोटबुक के लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट. द कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी, देखो द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी perpendicular to line of impact. The component of velocity of each body perpendicular to line of impact remains same, right? A perpendicular component will be remaining same because there is no force. That is important. Second step क्या करेंगे, we will try to find the coefficient of restitution. Okay, so what is the formula? Velocity of separation by velocity of कितना approach, right? So formula क्या है, v2 minus v1 by u1 minus u2, but we have to apply along the line of impact only, along the line of impact. So it is based on elastic collision. Oblique collision can be anything, right? So elastic collision, inelastic, perfectly inelastic collision is up, we have to put the E value. Along the line of impact, देखो along the line of impact minus u2 cos alpha. ये दो इक्वेशन यूज करके we will try to find v1 and v2. आने के बाद को रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा. तो मेरे so these are the steps you have to follow. These are the steps you have to follow. आपको first step is conservation of momentum.
cos alpha लगाने का. And E value, based on the elastica, inelastica, perfect inelastica, we have to substitute the values. And ये सब कुछ किस लिए? V1 आने के लिए. आने के बाद नेट स्पीड फाइंड किया तो विल गेट द आंसर. कुछ अंडरस्टूड? Yes, sir. या चलो ना एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बेस में करो, हो जाएगा. So only these two we have to apply. दैट्स इट. ये दो अप्लाई करें, दो इक्वेशंस यू कैन गेट द V1. में से सो V1. Sir, screen is stuck. ठीक है, Yeah, रीजन okay, में. now it's back. ओके ना, It's back, it's back, it's back. या चलो. सपोज मान लो यू हैव two objects. Second body is at rest, and this body is moving with velocity 4 meters per second. It on the line of impact. Perfectly One. on the one on the videos, so that I can know whether it's tracking or not tracking. So this is a collision हुआ. So it's stuck again. Is asking net velocity of the first sphere of sphere 1. Okay, now करो ये दोनों वहां से. So फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? आपको फर्स्ट कंपोनेंट्स निकालो. कंपोनेंट्स निकालो. So इसका that कंपोनेंट implies, oh, that gives 0. Okay, okay. या so इसका कंपोनेंट 2, so it is 2 root 3, and this will be 4 sin 30, so it is 2 meters per second. I told you उस तरफ वाला velocity same है, so this velocity is 2 meters per second. ये fixed है, and this direction I called as v1, and this direction I called as v. Okay, now try करो. I want velocity, net velocity is how much? So first step आपको conservation of momentum लगाओ along the line of impact only. One equation उधर से आएगा, and E value से one equation आएगा. Two variables, two equations solve. So is it elastic or inelastic? Elastic, perfectly elastic collision. E is 1.
So I got V2 is equal to 4 root 3 by 2 and V1 equal to 0. V1 is 0. Then I got V2 Yeah, 2 I got root 3. V2 is 2 root 3. V1 yeah, 2 root 3, 0. yeah. So 4 root नेट 3 by 2 वेलोसिटी is चाहिए 2 root मुझे 3 by नेट 2. वेलोसिटी चाहिए ना So what do you want? सो देखो v1 is 0 आया okay but I told you the net velocity will be we have to find right so they given options in terms of I cap j cap options में they given I cap j cap so 2 देखो root 3. नहीं ओनली v1 का चाहिए v1 का I cap j cap में So they just be given 2, मतलब right? फर्स्ट ईयर 2 का J cap. हाँ For V1 it will just be 2 J cap. नहीं देखो line of impact and this motion is 30 degrees right so this is 90 this will be how much 60 okay now tell me because इसका velocity तो जीरो है ना इसका तो संबंध नहीं है now इसका only एक ही velocity है 2 meters per second उसका I cap J cap दिया that's why we are taking along component tell me what is the component along this direction is 2 sin 60 and इस तरफ वाला component is 2 cos 60 and 2 sin 60 right so कितना होगा 2 into 1 by 2 so I cap here 1 I cap and here 2 into root 3 by 2 so root 3 j cap so answer is net velocity will be I cap plus root 3 j cap this is answer I cap plus root 3 j cap is answer so मैं अगर velocity होगा तो net velocity लेने का but since options are given in I cap j cap substitute करो देखो we studied already in the tell me So the second particle would also have velocity, no? Like final velocity. final velocity will be there but इसका perpendicular velocity तो नहीं है ना v2 will be there see separate sphere का we are here is asking velocity of the first sphere only first Okay. sphere net speed we are trying to find okay now in the same question में if e is 1 by 2 try to find velocity of the second sphere net speed we have to find second sphere same kahani It will be 4 root 3 by 2 or 2 root 3. सेम v2 चाहिए नेट वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर चाहिए सेकंड स्फीयर सेम कंजर्वेशन मोमेंट लगाओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाओ एंड फाइंड v2 Sir, 3 I cap plus root 3 j cap minus root 3 j cap. इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा नहीं होगा ना इसका राइट so only v2 will be there so v2 is how much no I Root 3 normal Minus बोलो 2 root 3 j cap. 2 root 3 j ना Minus. Sir, root 3 j cap minus root 3. first you apply conservation momentum along line of impact how much you got 2 root 3. 2 root 3 is equal to v1 plus v2 yeah है ना 2 root 3 is equal to v1 plus v2 Yeah, if you And apply e value लगाए तो कितना आया टेल में so if you apply equal to 1, you'll get v2 minus v1 minus equal to 2 root 3. v2 minus v1 is equal to 2 root 3. 2 root 3 या root 3 या 2 root 3. Root 3. I think something wrong है root 3 आएगा So isn't E1? So E is 1, right? हाँ Isn't E 1? no 1 by 2
हाँ सर 1 अगर mention 1/2. Oh, then you get V2 is. So then won't V1 be 3 root 3? हाँ √3 E is 1/2 √3 आएगा. So now substitute करो 3 √3/2 will be the answer. हाँ. आया ना? Sir, I got V2 is equal to 3 root 3. After that, what do I do? 3 √3/2 आएगा. आया ना 3 √3/2? Yeah. That's it. Because he use the 30 60 लगा के करने का, but no need, no. Okay, तो मैं Sir, so but oblique sir, when you found V1 net, how did you get I cap plus root 3 J cap? देखो इनिशियल मोशन को चेक करो, लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड दिस स्ट्रेट लाइन का एंगल इज हाउ मच 30 degrees. Yeah. Okay, straight line and angle is 30 Yeah. and remaining will be how much? This total is 90, remaining will be 60. 60. Okay, now देखो आपको V1 तो 0 आ गया, Yeah. right? हाँ, So, but now the now इसका root एक ही by कम 2, right? हाँ So if you take E equal to 1/2, you get V1 is equal to root 3/2. ओके. सपोज इन दिस केस में ही हैज ओनली सेकंड स्पीयर है, सेकंड स्पीयर का यूज किया. सपोज फर्स्ट स्पीयर का चाहिए बोले तो आपको V1 आएगा ना, V1 आएगा एंड ये भी आएगा ना. नेट वेलोसिटी क्या होगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. Okay, got. समझ आ रहा है? Okay, got it. व्हेन दे गिवन दिस वन एंड दिस वन, आपको नेट फाइंड करने का अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करने का, 2 स्क्वायर प्लस जो भी आया वैल्यू V1 का यूज करना पड़ेगा. एबल टू हियर? Yes sir. चलो, these are the things in oblique collision में. अंडरस्टैंड? सेम मेथड फॉलो करेंगे, हो जाएगा. ओके, चलो. Now we'll go for impulse. Impulse and small 2-3 problems करेंगे because we left right इसमें. ठीक है, impulse मालूम है ना? What is impulse means? Force into time. हाँ, मतलब अगर मैं बॉल को बैट से हिट करूंगा, दैट्स वेरी स्मॉल इंटरवल में ज्यादा फोर्स विल बी एक्टिंग. दैट फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड एज impulse. ओके, सो लिखो इज द टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. बॉल के ऊपर ज्यादा फोर्स एक्ट होगा वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, बाद में क्या होगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा उसके ऊपर फोर्स. ओके, and it is equal to product of average force and time, and that is equal to change in momentum. We represent an impulse as J, force into time, or change in momentum. Right? We know, right? F is equal to delta P by delta T. So, impulse is always equal to change in momentum. And इसी को भी called as impulse momentum theorem बोलते हैं. Impulse momentum theorem. And SI units is Newton second. So 1 second. अगर dt FDT यूज करके we'll try to find the impulse. एक और बेटा, हाँ. If the force is variable, use this formula, integral T1 to T2 F dt. And integration is nothing but area, right? Area under graph. Sometimes force time graph देगा. Impulse find करो बोले तो simply So can you go previous? क्या बोला? Yeah, so 1 second. हाँ. F dot delta T. Yes, sir, done. When the F and time graph is given,
Impulse is nothing but area under graph, because integration is nothing but area. ओके, चलो ना इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे, हो जाएगा. So majorly momentum फॉर्म में मालूम है ना, mass into velocity. So changing momentum means m into v minus u. Okay, करो आंसर बोलो. A cricket ball of mass is impulse and average force है. Sir, 4.8 and Yeah, 4.8 and So 4. 480. B, yeah. 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 Okay, देखेंगे. So answer is yes, B is answer. Next. He has given force versus time. He's asking impulse there. So variable force है. We have to find the area under the graph. Sir, 13,500 is impulse and 9,000 is force. So when I got 13,500 as impulse, I'm finding force. Okay, fine. So for force, what do we take the time as? 1.5? No, if force किस तरह factor वही time we should take. Oh, So 1.5. 2.5 minutes. Yeah, the 9,000 only. 9,009 at 1.35 temper 4. Okay. That's what. Pulse is asking average retardation and average retardation of the hammer. A force है, a acceleration.
The first one I got -6. So second one I got minus. Second one I got 60. So third one's also 60. 60. Third one also 60, right? F by M, yeah. Yes, correct. Okay. So हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम करने वाले हैं. वो नेक्स्ट क्लास में करते अच्छे है. Okay, sir. Cool.